Srila Prabhupada, Trivikram Swami said he's not going to stay here in Mayapur. तो इस समय गौर वैष्णव गोस्वामी महाराज ने कहा श्रील प्रभुपाद त्रिविक्रम स्वामी महाराज ने कहा है कि वो यहाँ मायापुर में नहीं रहने वाले हैं. So Prabhupada looked at me with flashing eyes. प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा, इसमें उनके आंखों में बिजली. And why you won't stay here? आप यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हो? Actually, he was offering me a very exalted position, co-director of Mayapur. तो प्रभुपाद ने बोले कि वो आपको इतनी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं, co-director of Mayapur. But one of the reasons I didn't like it was I felt Prabhupada should call me directly and tell me instead of through somebody else. तो मैंने कहा कि मुझे ये पोजीशन एक कारण ये है कि मुझे क्यों पसंद नहीं आया यहाँ रहना. इसलिए वो मुझे बुलाना था और प्रत्यक्ष रूप से मुझे बताना था. कृष्ण महाराज के माध्यम से मुझे बताना. That was my pride. वो मेरा अहंकार. I was pride. I'm a young American, ready to do, but I didn't like that. I wanted to have direct relationship with Prabhupada. मैं युवा भारतीय शक्तिशाली भारत अमेरिकन था, तो लेकिन मैं चाहता था सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन प्रभुपाद मुझे प्रत्यक्ष रूप से कहें, किसी के माध्यम से नहीं. Anyway, he defeated me very firmly, and I remember thinking, I was in the Navy, so I felt like a military order was coming. I said to myself, yes, sir, and I agreed to stay there in Mayapur. लेकिन श्री प्रभुपाद ने मुझे निश्चित रूप से उसमें हरा दिया, और जैसे सेना में हम कप्तान का आदेश मानते हैं, तो मैंने कहा, yes, sir, मैं आपके आदेश पालन करूँगा और फिर मैं मायापुर में रहूँगा. But Prabhupada noted it, and from then on, he would directly give me assignments. लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात को ध्यान में रखा और उसके बाद वो प्रत्यक्ष रूप से मुझे जिम्मेदारियां देते थे. That's why they're saying is there that when one GBC was criticizing me, and Prabhupada said no, he will go wherever I send him. तो जैसे यहाँ बताया गया कि एक GBC महाराज के बारे में कुछ की आलोचना कर रहे थे, तो शुक्र महाराज नहीं, जहाँ मैं उसे भेजूंगा वो वहाँ जाने को तैयार है. So the godbrothers used to quarrel something, but it wasn't so serious. It was like sometimes puppy in the same litter, they fight each other. So there was no big thing about it. कभी-कभी आपस में गुरु भाई की लड़ाई होती थी, लेकिन ये कोई ज़्यादा गंभीर नहीं थी. इस तरह छोटे-छोटे बच्चे लड़ते हैं. Because we all wanted to please Prabhupada. क्योंकि हम सभी चाहते थे, हमारा लक्ष्य एक ही था, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना. So we can keep that same mood now, and then this movement can go on for 10,000 years. और यदि यही मनोभाव हम अभी भी बनाए रखते हैं, तो ये आंदोलन 10,000 सालों तक चल सकता है. I was in the car with Srila Prabhupada when he made that statement. I was in the vehicle, Samahut. मैं वाहन में था श्रील प्रभुपाद के साथ, तो श्रील प्रभुपाद ने ये बात कही. What do you say? Car is? गाड़ी. So we were coming back from a morning walk to the Los Angeles temple. हम मॉर्निंग वॉक करते हुए लॉस एंजलिस मंदिर के आ रहे थे. And in Los Angeles we have a big temple like this, and mostly the whole street is owned by devotees or the temple. तो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, जितना मुझे ध्यान है, तो पूरी गली जो है उसमें सब भक्तों के द्वारा ही वो मकान वगैरह बनी गई हैं. This was this summer 1976. 1976 गर्मियों की बात है. So when Prabhupada saw it, we came back a different way. They weren't expecting us. But when the car came on the street, we saw all the devotees were waiting. They had their tilak and their children were there and bead bags, and we came from behind. तो हम दूसरे रास्ते से आए, तो देखा कि कार जब उस तरफ आई, हमने देखा सारे लोग तिलक में बच्चों के साथ माताजी लोग सब खड़े हैं और पीछे से आए. So Prabhupada was inspired by seeing his disciples. And he said, with full authority, they cannot check this movement. तो श्रील प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता. You got it right? Then
Prabhupada continued in that mood of full authority. He said, it will go unchecked for the next 10,000 years. तो प्रभुपाद जी ने और पूर्ण अधिकार के साथ कहा कि 10,000 सालों तक इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है. Oh, it's a fact. This movement is going unchecked for 10,000 years. और ये एक तथ्य है कि 10,000 सालों तक ये आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा. Especially here in India, I'm very impressed how many young men and women are coming to this movement. Especially भारत में मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कितने युवक युवतियाँ इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं. Because I was here preaching like in the 70s and maybe early 80s, but I found it was difficult for me to preach in India. तो मैं यहाँ पे 70s या early 80s में प्रचार कर रहा था. मुझे उस समय लगा कि भारत में प्रचार करना बड़ा कठिन है. But I see now, so many people are becoming devotees. मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग भक्त बनते जा रहे हैं. I was in Hyderabad and Bangalore and Pune. There's really so many young men, especially. There was like 800 of them there. Pune. Was it Pune? Yeah. तो लेकिन अभी मैं भारत में देख रहा हूँ कितने भक्त बन रहे हैं. हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे होते आया. बहुत सारे युवक व्यक्तियाँ भक्त बन रहे हैं. विशेष रूप से पुणे में 800 युवक थे. 800 brahmacharis. They were serious. They want to be brahmachari. 800 ब्रह्मचारी मतलब बहुत गंभीर थे. सही ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार हैं. Only thing I felt bad about was the poor girls. महाराज एक चीज महाराज को थोड़ा सा उसमें बुरा लगा कि माता जी इस बारे में. Now, once Prabhupada said that, because that was true, there were some ladies coming, they had children or they were older. It was hard even for Prabhupada to get a husband for them. तो ऐसा हुआ था कि उस समय बहुत सारी माता जी थी, संतानें थी, वो रहना चाहते थे. प्रभुपाद जी के लिए कठिन था उनके लिए एक पति. But Srila Prabhupada said, that's okay. Krishna is ready to be your husband. Srila Prabhupada वो सब ठीक है. कृष्ण आपके पति बनने के लिए तैयार है. He has 16,108. He can have a few hundred more. 16,108 रानियां हैं उनके पास. कुछ 100 और भी वो संभाल सकते हैं. Of course. But we have to become pure devotees. लेकिन हमें शुद्ध भक्त बनना होगा. Just like Draupadi, she was a pure devotee. Because of her, the whole battle of Kurukshetra took place. द्रौपदी है वो शुद्ध भक्त थी. उनके कारण जो है पूरा महाभारत का युद्ध हुआ. Even great advanced devotees like Drona and Bhishma, they had to die. महान जो धनुर्धर थे द्रोण भीष्म उन्हें भी मृत्यु प्राप्त हुई. Because they didn't stop that insult to Draupadi. क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था उसमें उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया. Therefore, he gave her unlimited sari. इसलिए कृष्ण ने उन्हें अनंत साड़ी प्रदान की. And he took a vow, I'm going to kill all these rascals. और कृष्ण ने प्रण लिया कि मैं इन सभी जो विरोधी हैं इनका संहार किया जाएगा. But we're not like these Jains who say, no, you can't be violent. No, Arjun's violence is perfect yoga. अर्जुन ने जो हिंसा की वो ऐसा नहीं कि हम हिंसा को गलत लें. वो एक पूर्ण योग है. Srila Prabhupada ki. So, another nice pastime is we were in London. I had a lot of pastimes in London. So, I was massaging Prabhupada's feet, and I got a remembrance like my mother bathing my feet. तो एक और लीला है कि हम लंदन में थे श्री प्रभुपाद के साथ. श्री चरण कमलों की मैं मालिश कर रहा था. मुझे याद आया कि मेरी माँ इस तरह मेरे पैरों को नहलाती थी. So I said that to Prabhupada. Srila Prabhupada. मैंने प्रभुपाद को ये बात कही. He said, yes, this is mother's work that you're doing. श्री प्रभुपाद ने हाँ ये माँ का ही काम है जो आप कर रहे हैं. The mother is taking care of the child. So we were thinking like that. Prabhupada was such a good boy and he would sit so straight
and we were taking care of him. And so that's how Prabhupada saw it. We were doing mother's work. तो माँ जो है इस तरह बच्चे की देखभाल करती है, हम भी इस तरह से कि प्रभुपाद एक अच्छे बालक हैं, सीधे बैठते हैं और उनकी मालिश करते हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा कि ये जो माँ का काम है, ये आप लोग कर रहे हो। And because of Prabhupada's humility, he accepted our service, and he didn't tolerate. He tolerated us. तो प्रभुपाद ने विनम्रता थी कि उन्होंने हमारी सेवा को स्वीकार किया और हमें सहन किया। But one time, he got angry with me when I was giving massage. This is like the first time we had a big program in London, and many Hindus came, 300 or 400. And so some of the Hindus were not happy with Prabhupada's message. They were saying, "What about Lord Shiva? What about?" And they were disrupting the class. बहुत सारे हिंदू प्रभुपाद के संदेश से खुश नहीं थे, बोले शिवा के बारे में आपको कुछ नहीं, भगवान शिव का क्या कहें, उनका क्या कहें, इस तरह से वो क्लास में पूरा परेशानी खड़ी कर रहे थे प्रभुपाद जी क्लास में। So we never saw Prabhupada. He was like a lion. तो हमने इस तरह को तो नहीं देखा, प्रभुपाद एक सिंह की तरह दहाड़ रहे। But it was a series of lectures. So the next day he was going to give another lecture. तो ये प्रवचन की श्रृंखला थी, अगले दिन एक और प्रवचन होना था उसी क्रम में। So I was massaging him, and I was feeling like I was a trainer, getting him in shape for another knockout performance. तो मैं जब उनकी उसका मसाज कर रहा था, लग रहा था कि मैं एक ट्रेनर हूँ और उनको ट्रेन कर रहा हूँ कि एक बार नॉकआउट परफॉर्मेंस हो जाते हैं। My mentality was, you and me, Prabhupada, we could take over the world. हाँ, और ये भी मन में भाव आता है कि यदि आपको आवश्यकता हो, हम भी आपके रोल में उतर सकते हैं सर। So I was massaging and talking and massaging and talking, and suddenly he said, "No!" My hands froze on his body. तो मैं मसाज कर रहा था, बोल रहा था, मसाज कर रहा था, बोल रहा था, और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तो हाथ वहीं पे मेरे जम से गए। Then with another voice like a child, a 7-year-old boy, he said, from way in his heart, "I am just a humble servant." तो श्री प्रभुपाद से एक 7 वर्ष का छोटा बालक होता है, उतनी कोमल और मधुर आवाज में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक विनम्र दास हूं, मैं कुछ नहीं। And I felt so embarrassed that I was thinking, I'm just an ordinary person. I shouldn't be allowed in the same room with him. He's such an aristocrat. But and what to speak of touching his body. तो मतलब उस समय बहुत शांति का अनुभव हुआ और मैं सोचा कि मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, इस एक कक्ष में हम साथ में रहने के योग्य नहीं हैं, मैं उनके साथ रहने योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे इतना अपने शरीर का स्पर्श करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। And there was a rug there. I thought I should go under the rug. एक चट्टान वहाँ पे थी, मुझे लगा कि मैं इसके अंदर चले जाना चाहिए। But Prabhupada was so humble, he made me a little humble. And his humbleness was real. He wasn't artificially humble. He really was humble because in the relationship with his guru and Krishna, he was a humble servant. There's no doubt that Prabhupada was humble. Even in ordinary dealings, he wouldn't push, he wasn't self-assertive. Once they were waiting online with some disciples and to go on the plane, and a lady came, "This is my spot." She somehow pushed in front of Prabhupada, and Prabhupada didn't push back, he stepped back. तो एक बार हम सब लाइन में खड़े थे, शिष्य लोग, एक जहाज में को जाना था और एक लेडी आई और बोली कि नहीं, ये अभी मुझे जाना है। श्री प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि उनको धक्का दे दिया, श्री प्रभुपाद ने अपने पीछे कर दिया, तो आगे से। I see on the roads, practically you have to push forward, otherwise everybody cuts you off.
रोड्स में मैंने देखा प्रैक्टिकली आपको खुद को आगे धक्का देते हुए लोग धक्का तो आगे बढ़ना पड़ता है, वरना सब तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं. But it's better to, you know, I don't know how to describe it, but it's like a cultural shock for me. Cultural shock. तो ये मेरे लिए कल्चरल शॉक था, सांस्कृतिक रूप से ही था. There's 3 lines for people to cross. In America, everybody stops if there's somebody in the want to cross the street. तो वहाँ पे 3 लाइनें हैं लोगों के जाने के लिए. तो अमेरिका में जब ऐसा होता है तो हम लोग जाते हैं, लोग जा पाएं. But here the pedestrians back and forth, cars are going every side. लेकिन यहाँ पे कोई नियम नहीं, सब तरफ से कारें आ जा रही हैं. Why is that? क्या है? I'll tell you why. Motive passion. ये है रजोगुण. We let the motive passion enter because that way we think we can get something done. रजोगुण हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. I have to get there and then I'm going to do something. मुझे वहाँ पहुँचना है, उसके लिए मैं कुछ करूँगा. Well, we're not the doers. If we let Krishna use us, then we can use some passion. Arjuna was angry when he was shooting the bow. लेकिन हम करता नहीं हैं, कृष्ण हमारा उपयोग करेंगे. हम अपने रजोगुण का उपयोग कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में, जिस तरह अर्जुन तीर चलाते हुए कर रहे थे. But not for our own advantage. लेकिन खुद के लाभ के लिए हमें इसका उपयोग नहीं करना. Everybody comes to the material world with the idea we can dominate the material world and become the enjoyer and then be happy. हर कोई भक्त को इसलिए आता है कि इसको प्रभुत्व हो जाता है और इस पर अधिकार करे, भोग करे और इस तरह प्रसन्न रहे. But it doesn't work. Who's happy? लेकिन इस तरह होता नहीं. कौन है प्रसन्न? Sweet 16 and bitter 60s. Sweet 16 या bitter 60s. मतलब क्या कहना है? Nobody's happy when they're 75, 80. They have no future. 75 का हो, 80 का हो, कोई कुछ भी नहीं है, कोई उनका भविष्य ही नहीं. But I'm happy. I'm happy because every day I feel Krishna comes in my life more and more. मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि हर दिन मैं अनुभव करता हूँ कृष्ण मेरे जीवन में और अधिक आते जा रहे हैं. And so I'm making progress. तो मैं उन्नति कर रहा हूँ इस प्रकार से. So when you're making progress in the most important thing, then you feel happy. और जब आप उन्नति करते हैं तो फिर मतलब चीज़ क्या होती है कि आप खुशी का अनुभव करते हैं. But your grandfathers who are 80, they have no future. लेकिन आपके जो दादाजी हैं 80 साल के, उनका कोई आगे भविष्य नहीं. They just have to think, now my body is causing more problem, this problem, that problem. वो बस यही सोच पाते हैं कि अभी ये शरीर समस्या हो रही है, ये समस्या हो रही है, यहाँ हो रही है. And it's true. और ये सही है. The body does cause more trouble. और शरीर में समस्याएं. Like I can't sit on the floor like this. My knees don't bend anymore. जैसे मैं इस तरह जमीन पर नहीं बैठ सकता, मेरी घुटनों की समस्या के कारण. I hurt one knee 5 years ago, and after that I could never sit cross-legged. तो एक बार 5 साल पहले मुझे घुटने में चोट लगी, उसके बाद से मैं इस तरह आदमी की बात नहीं बैठ पाता. And I have no appetite hardly. Not much appetite. हम ज़्यादा भूख भी मुझे नहीं लगती. My servant is trying to feed me. Take more, take more. I can't eat more. जो मेरे जो दास है वो मुझे और प्रसाद के लिए कहते हैं कि मैं लगातार नहीं खाता हूँ. So, only thing left for me is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो एक चीज जो मेरे साथ है मतलब वो है हरे कृष्ण का प्रेम. So what should I do? Yes. What should I do now? You can take questions or I can... Okay, I'll try. I was with Bhakti Charu intimately in the last days of Srila Prabhupada's last days. Srila Prabhupada के अंतिम दिनों में भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के साथ मैंने काफी अंतरंग क्षण बिताए. Especially the last month in Vrindavan. विशेष रूप से वृंदावन में आखिरी महीना था श्री प्रभुपाद जी. So Tamakrisha Maharaj, Bhakti Charu Maharaj and Bhavananda, they were the kind of like the 3 intimate people dealing with Prabhupada.
तमाम कृष्ण महाराज, भगवान महाराज और भक्ति चरण महाराज तीन मुख्य व्यक्ति थे जो श्री प्रभुपाद के संबंध में आदर्श में चर्चा करते थे। उनके अंतिम दिनों में And I saw how devoted they were to Srila Prabhupada. हमने देखा कितने समर्पित थे वो श्री प्रभुपाद के प्रति। Bhakti Charu was always close to him. He was the one to give medicine. He would advise him on some things. तो भक्ति से स्वामी महाराज उनके बहुत ही करीब थे, श्री प्रभुपाद के। वही दवाइयाँ श्री को देते थे और अलग-अलग चीजों पे श्री को बताते थे। But Prabhupada's consciousness was very good. He didn't become senile or lose his awareness. श्री प्रभुपाद की चेतना जो है वो एकदम पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में थी। He couldn't hear too well. We had to go close to speak to him. वो एकदम से सुन नहीं पाते थे, हम उनके पास जाके उनसे बात करनी पड़ती थी। He stopped chanting japa, but in his room we had 24-hour kirtan going. श्री प्रभुपाद ने उस समय जब नहीं कर पाते थे, लेकिन उनकी कक्ष में 24 घंटे कीर्तन हम लोग करते थे। We used small cartels, and very softly we'd sit in the back and keep the mantra going. छोटी करता के हम बैठते थे उनके पीछे और निरंतर कीर्तन करते रहते थे। And few of us, we had 2-hour shifts. Then the next party would come and 2-hour shifts. इस तरह 2-2 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी। 2 घंटे के बाद दूसरे भक्तों का समूह आएगा, वो कीर्तन करेंगे इस तरह। So 4 or 5 of us at one time. एक समय पे हम 4-5 लोग कीर्तन करते थे। But Prabhupada was aware. He could. Sometimes he corrected us. Sometimes he appreciated. लेकिन प्रभुपाद इस संबंध में पूरी तरह जागृत थे। कभी-कभी वे कीर्तन के समय हमें सुधारते थे, कभी-कभी हमारी प्रशंसा भी किया करते थे। So then there was I think I helped participated, but what happened was I was sick for a few days. तो मैं सोचता हूँ मैंने भी उसमें भाग लिया, लेकिन क्या हुआ कुछ दिनों तक मैं बीमार था। And then when I came back, I was singing again, and Prabhupada recognized my voice. और फिर मैं ठीक होके आया तो उस समय गा रहा था और श्री प्रभुपाद ने मेरी आवाज को पहचान लिया। And then Prabhupada said to me, "Oh, you are still here." और मैंने कहा प्रभुपाद मैं हूँ। प्रभुपाद कहा हाँ आप अभी भी यहाँ हैं। But I felt like crying because where would I go? तो मैं सोचा कि मैं रोने लगा, लेकिन मैं सोचा मैं प्रभुपाद आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा। So Prabhupada was kind of changed in mood. He was in Bhagavatam. Everybody else was a devotee except him. That's how he was thinking. तो प्रभुपाद का जो मनोभाव है वो एकदम बदल रहा। प्रभुपाद एक महाभागवत थे। मैं सोचता था कि सभी भक्त हैं, केवल मैं भक्त नहीं हूँ। He was saying, he said, "I'm just trouble for you. You should be out preaching, but you have to stay with me, an old man." प्रभुपाद जी बोले कि मैं आपके बारे में सोचा कि आपको प्रचार में आप लगे रहें, बजाय कि मेरे साथ रहने के। Then he said to me, "Call the others." फिर प्रभुपाद ने कहा बाकियों को भी बुलाइए। That means all the leading devotees, of course, Bhakti Charu, Tamal, Bhavananda. So the room filled up with all the senior devotees. And Prabhupada declared that he wasn't getting better just staying in one place. He wanted to preach. He wanted to do Trivikram. So he ordered us to get a bullock's cart. There are a few devotees who were in favor, but most of the devotees were against the idea. But it was his idea, so we had to try to facilitate him. So he asked Lokanath to arrange for a bullocks because he was famous with the bullock carts. तो उन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज को बुलाया इसका अरेंजमेंट करने के लिए कि वो इस प्रचार कर रहे थे उसके माध्यम से। And Lokanath Maharaj asked me to go with him. We went to Agra to get a bullocks. Lokanath asked me to go with him, so
So the two of us went to Agra, where we got a bullocks. तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने मुझे कहा कि वो बैलों को लेने के लिए हमें चलना है, तो हम दोनों आगरा गए, वहाँ से बैल लेकर आए. And we brought that bullocks. We didn't bring them, but the bullocks came the next morning, early in the morning. तो अगले दिन सुबह वो बैल आ गए. But that evening, I was in Srila Prabhupada's room having darshan, and his godbrother was there. Krishna, what's his name? Krishna Babaji. Yeah, Krishna Babaji Maharaj. लेकिन उस शाम को मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में था और उनके गुरु भाई वहाँ बैठे थे, श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज. And he was sitting on Prabhupada's bed. श्रील प्रभुपाद की तरफ उनके बिस्तर पे ही बैठे थे. And he was amazed that Prabhupada was his consciousness was so clear. और वो बहुत आश्चर्य थे कि श्री प्रभुपाद की चेतना एकदम स्पष्ट, बहुत ही स्पष्ट अवस्था में. And he made a comment like that, and Prabhupada wanted us to hear it. और इस तरह से उन्होंने टिप्पणी की और प्रभुपाद हम भी उनको सुने. So then the darshan went on a few minutes, and suddenly your Bhakti Charu Maharaj and Bhavananda came into the room. They were kind of in a distressed mood. और अचानक आपके भक्ति चारू स्वामी महाराज और भगवान महाराज आए कथा पक्ष में और वे थोड़े चिंतित दिशा में दिख रहे थे. And they said, Srila Prabhupada, Tamakrishna is very upset that you're going to go on the bullocks. He thinks it's very upsetting. We know how tender your body is, and now it's that winter is coming. Where will you stay? And so on like that. उन्होंने कहा प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद कृष्ण महाराज आपके बारे में बहुत चिंतित हैं. आपका शरीर बहुत ही कोमल है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. अभी ठंड का मौसम है, कहाँ आप रहेंगे? ये परिक्रमा में जाएंगे तो बड़ी समस्या आएंगी. So I saw Bhakti Charu love Prabhupada so much. तो मैंने देखा कि भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रभुपाद से कितना प्रेम करते थे. He was just pleading with Prabhupada. वे प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि वो न जाएं. And then Prabhupada said to Babaji Maharaj, he said, Krishnadas Babaji Maharaj, he said to all of us, he said, I did not want to create this kind of disturbance. तो श्रील प्रभुपाद ने श्रील कृष्ण महाराज ये हम सभी से कहा कि मैं इस तरह कोई परेशानी आप लोगों के लिए खड़ी नहीं करना चाहता. And he said, just see how much they love me. और श्रील प्रभुपाद ने कहा देखो ये लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं. Then Prabhupada agreed not to go on the bullock. तब प्रभुपाद सहमत हो गए कि मैं नहीं जाऊंगा. And then 3 or 4 days later, he left his body. 3 or 4 days later, he left his body. और उसके 3 या 4 दिन बाद श्री प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया. Srila Prabhupada ki. So there's no doubt that Bhakti Charu was very dear to Srila Prabhupada. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति चारू स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद को बहुत ही प्रिय थे. That's why I'm of the firm conviction that Prabhupada said, well, he did something wonderful here already. Now I need him to help in some other place. So Prabhupada took him. इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि श्री प्रभुपाद देखा कि यहाँ उन्होंने बहुत ही विशेष कर दिया है और अभी कहीं और करने की आवश्यकता है. श्री प्रभुपाद उनको अपने साथ ले गए. And he left us disciples who weren't so valuable. He left people like me who weren't so valuable. He left us here. और श्री प्रभुपाद उनको अपने साथ ले गए और हमें बाद में बता रहे हैं कि हमें छोड़ जाए क्योंकि हम इतने मूल्यवान नहीं हैं. Bhakti Charu once told me a story also about his relationship with Prabhupada. भक्ति चारू स्वामी महाराज ने मुझे श्री प्रभुपाद में संबंध है उसके बारे में एक कथा एक घटना बताई थी. So he told me, he related, maybe he's also told some of you, that there was a little delicate issue how to properly deal with Prabhupada's body after he left. तो एक बार हो सकता है शरण आपको भी बताई हो एक बहुत ही गंभीर सहज विषय था कि श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद उनके शरीर के साथ क्या साथ क्या करना है. Nobody wanted to ask Prabhupada,
what should we do with you, Maharaj? कोई प्रभुपाद से पूछना नहीं चाहता था कि प्रभुपाद बापू के साथ Because we would think he's going to live. क्योंकि हर कोई सोचता था कि प्रभुपाद तो जीवित रहेंगे. But anyway, Tamal was very intelligent. He was the secretary. लेकिन इधर तमाम कृष्ण महाराज जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, वो सचिव थे. So he asked Bhakti Chu to go to, I'm not sure which Maharaj it is, but one of Prabhupada's godbrothers, Puri Maharaj or maybe it was Ryan Maharaj, somebody, to find out what would be the proper etiquette for dealing with his body. तो उन्होंने श्री भक्ति चौथ महाराज से कहा कि आप जाके उनके गुरु भाइयों से पूछिए. तो पुरी महाराज या नारायण महाराज से मिलने गए कि हमें श्रीमद बापू के साथ क्या करना चाहिए उनके जाने के बाद, किस तरह हमारी सेवा होना चाहिए. During the time he was gone, Prabhupada called for him. जब वो गए हुए थे तब श्री प्रभुपाद ने भक्ति चौथ महाराज को बुलाया. उसमें वो वहाँ थे नहीं. So Bhakti Chu Maharaj said, Prabhupada, I went to see Puri Maharaj or something. I forget what. तो भक्ति चौथ महाराज ने कहा कि प्रभुपाद मैं पुरी महाराज से मिलने गया था. And Prabhupada didn't like that. प्रभुपाद को ये बात पसंद नहीं है. Why are you going to see him? क्यों आप उनसे मिलने गए थे? And then he said, Tamal Krishna Maharaj sent me, Prabhupada. और उन्होंने कहा प्रभुपाद ने बाबा कृष्ण महाराज ने भेजा था उनसे मिलने जाने. Then Prabhupada calmed down a little bit. तब प्रभुपाद थोड़े से शांत हो गए. But there was some jealousy. He wanted us to be loyal to him, not to go to Gaudiya Math or this place. No, he wanted us to remain in Iskcon. लेकिन प्रभुपाद चाहते नहीं थे कि हम अलग-अलग दिशाओं में जाकर भटकें. गौड़िया मठ और अलग जगह पे चाहते थे कि हम इस्कॉन में ही भक्ति करके आगे प्रगति करें. So that was good because we realized that Prabhupada was expecting us to be loyal. और ये अच्छा भी था क्योंकि हमें समझ में आया, अनुभव हुआ कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम विश्वास पात्र रहें, एक निश्चित रूप से भक्ति करें. And Bhakti Chu Maharaj certainly proved that he was loyal. और श्री भक्ति चौथ महाराज ने ये सिद्ध किया वे प्रभुपाद के प्रति पूरी तरह समर्पित भक्त थे. And we should be also loyal. और हमें भी इस तरह से जिम्मेदार होना चाहिए. This is the only way we can keep this movement together for 10,000 years. यही एक तरीका है जिसके द्वारा संतुलन को हम 10,000 साल तक बनाए रख सकते हैं एक साथ. We have to keep Prabhupada in the center. हमें प्रभुपाद को केंद्र में बना के रखना है. Every temple, the Prabhupada Murti is there. हर मंदिर में प्रभुपाद की मूर्ति है. Every temple we have Guru Puja for Srila Prabhupada. हर मंदिर में गुरु पूजा होती है श्री प्रभुपाद की. Every temple we read only from Prabhupada's Srila books. हर मंदिर में श्री प्रभुपाद की पुस्तकें लिखी हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं. This way the movement can go on. यही जारी रहे तो आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा. And the sannyasis can mix in any temple like me. और सन्यासी हर जगह रह सकते हैं, मिल सकते हैं, जिस पर बिल्कुल जाना चाहिए. I came to India after 23 years, but everybody is happy to see me. Gopal Krishna Maharaj and who else did we meet? My godbrothers. Huh? I didn't meet him. Yeah, Chandramalli Maharaj. So they're very happy to see us, and they welcome us, and they chant with us. So it's a feeling of that we're one society. तो मैं जैसे 23 साल बाद भारत में आया, लेकिन सही भक्त बोले बहुत प्रसन्न हुए कि जो मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, चंद्रमौली गोस्वामी महाराज से मिला, साथ में हमने कीर्तन किया होंगे. तो इस तरह से हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं. In this way, Prabhupada will be pleased. इस तरह से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे. But I can say for sure that Prabhupada loved Bhakti True with his whole heart. निश्चित रूप से जो बात मैं कह सकता हूँ, श्री प्रभुपाद ने पूरे हृदय से भक्ति चौथ महाराज को प्रेम किया. Bhakti True Maharaj ki. Srila Prabhupada ki. Okay, any questions? You can ask philosophy questions or whatever. कोई प्रश्न, कोई भी दार्शनिक प्रश्न है या और भी प्रश्न जो आप पूछना चाहें. We should all know some philosophy. We can speak. If people on the street ask us, we want to give you this book, and they say, well, what's in the book? Oh, I don't know. It's only for you.
हमें फिलोसफी भी जाननी चाहिए। एक बार जैसे पुस्तक बांट रहे हैं तो उन्होंने कहा सर किताब लीजिए, बोले क्या है किताब में, बोले ये तो आपके लिए नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी दर्शन जानना चाहिए। Sometimes Prabhupada would test us. कभी प्रभुपाद हमको डांटते थे। I was giving massage and I was just a new devotee. 1969, I joined in 68. I was a one-year devotee and Prabhupada was asking, so what are Krishna's three primary energies? तो जैसे मैं एक मसाज दे रहा था 1969 में ज्वाइन किया तो एक साल पुराना भक्त था, मसाज दे रहा था। श्रीला मुझसे प्रश्न पूछा, कृष्ण की प्रमुख मुख्य तीन शक्तियां क्या हैं? What are the Krishnas? Stand up. Three primary energies of Krishna. Huh? How long you been a devotee? 1 year. कितने समय से आप हैं? एक साल। So what are Krishna's three energies? Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti and Or you can just say internal, external, and marginal. The Lord, the living entities, and material nature. Okay? Thank you. तो ये तीन अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये तीन शक्ति हैं। This is mentioned in the 7th chapter, text 4. ये भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है। We should learn this Bhagavad Gita. भगवद गीता पर हमको सबको सीखना चाहिए। It's very simple, very logical, reasonable. सरल है, तार्किक है, और तर्कसंगत है। And Krishna clearly says, Yaya Papa. The more you surrender to me, the more I reciprocate accordingly. और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। So why not try it? तो क्यों ना हम इसे सीखें? But we should think, I'm going to do something now for Krishna, not just the ordinary thing and see the deity. I'm going to do something that is going to create a little sacrifice for me. तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कोई विशेष करूं, ऐसा नहीं केवल विग्रहों का दर्शन करूं बल्कि ऐसा कुछ करूं जिससे कृष्ण के लिए मैं त्याग करूं, उनके लिए कुछ हासिल करूं। Maybe you can cook something nice with it, and I don't know if they'll take you off, you know, right? Or maybe you can clean the temple. There's something you can do. Talk to people about Krishna. जैसे आप कृष्ण के लिए मंदिर बना सकते हैं, मंदिर प्रांगण को स्वच्छ कर सकते हैं, लोगों से कृष्ण के बारे में बातें कर सकते हैं। So come out of your comfort zone a little bit. तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए। We can use our words to glorify Prabhupada and Krishna and your Guru Maharaj. हम अपने शब्दों का उपयोग प्रभुपाद, कृष्ण, गुरु महाराज की महिमा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। You can use your time to somehow improve his mission. आप अपने समय का उपयोग कर सकते हैं इस आंदोलन को और सुधार करने के लिए। Or you can give some money. कुछ दान दे सकते हैं। And your words, I said that, huh? Yes, sir. शब्दों के माध्यम से इस तरह कई तरह से भगवान की सेवा में युक्त हो सकते हैं। So make a little push on to yourself. तो थोड़ा सा जो है अपने आप को थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा। And then you'll see Krishna will somehow reciprocate. और तब आपको अपने आप अनुभव होगा कि कृष्ण किस तरह से आपके जीवन में आदान प्रदान कर रहे हैं। He'll think, oh, this devotee is getting more serious. He'll think this devotee is getting more serious. कृष्ण देखेंगे कि हाँ ये भक्त जो है और अधिक गंभीर होता चला जा रहा है। Just like once, I'll tell you how Prabhupada looked at me like that. जैसे Prabhupada once looked at me the same way. प्रभुपाद मेरी ओर उसी तरह से देखा। Oh, he's getting more serious. ओ ये और अधिक गंभीर होता जा रहा है। What happened was, I had done my service and I came to Prabhupada for a new service. क्या हुआ कि मैंने अपनी सेवा खत्म की महाराज ने और प्रभुपाद के पास गया एक और नई सेवा के लिए। It was in Vrindavan, उस समय हम लोग वृंदावन में थे। Krishna Balaram Mandir. कृष्ण बलराम मंदिर में। And Prabhupada's quarters is there. प्रभुपाद जो है हमें बुलाया। So he gave me an appointment at 11 o'clock in the morning. 11 बजे सुबह की बात है। So I was chanting my japa
waiting for the time when I was to go to Prabhupada's room. तो 11 बजे बुलाया तो मैं जब कर रहा था समय की मुझे पता था कब प्रभुपाद से मिलने जाऊंगा. And in my mind, I was thinking, I'm going to tell Prabhupada I want to do this. But then another part of my mind said, well, maybe I should just do what he wants me to do. तो मैं सोच रहा था प्रभुपाद बताऊंगा प्रभुपाद जी मैं ये करना चाहता हूँ. तो मन में एक विचार ये आ रहा था कि प्रभुपाद जी जो कहेंगे मैं वो करूँगा. But then I thought to myself, what if he tells me to do something I don't want to do? लेकिन फिर मन में आया प्रभुपाद जी ऐसा कुछ बोल देंगे जो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो फिर क्या होगा. So like this, my mind was going back and forth. तो इस तरह मन में उथल-पुथल मची हुई थी. So anyway, by the influence of Vrindavan, and came into Prabhupada's room, and I bowed down, and he said, so what would you like to do now? तो वृंदावन का प्रभाव था. मैं इस तरह वहाँ पे गया, प्रणाम किया, और फिर प्रभुपाद जी ने मुझे पूछा कि हाँ, तो अब आप क्या करना पसंद करेंगे? I said, I can do whatever you like, Sri Prabhupada. मैंने कहा प्रभुपाद जी जो आपको पसंद, जो आप चाहते हैं, वो मैं कर सकता हूँ. He looked at me, really? प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा. He didn't say really. He didn't say really, but that was his look. उन्होंने ऐसा कहा नहीं, सही कह रहे हो, लेकिन उनका लुक इस तरह से था. He didn't think I had it in me to really surrender fully. तो प्रभुपाद जी को ऐसा लगा कि मैं इतना तैयार नहीं हूँ अभी पूरी तरह शरणागत होने के लिए. But that's the requirement. We want to go back to Godhead. We have to fully surrender. लेकिन वास्तव में यही एक जरूरत है. यदि आप भगवद्धाम जाना चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा. Man manabhava mad bhakta. मनना भगवत. Sarvadharma pujaja. Give up everything. Just come to Krishna's feet and don't worry. सर्वधर्मान् परित्यज्य. सब कुछ त्याग दीजिए और कृष्ण के चरणों में शरण लीजिए और चिंता मत कीजिए. Krishna can help you in every circumstance. कृष्ण आपकी हर परिस्थिति में मदद कर सकते हैं. He promises, I'll carry what you lack, I'll preserve what you have. कृष्ण कहते हैं कि जो आपके पास नहीं है वो प्रदान करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ. Okay, any other? Okay, Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare. My question is, first of all, thank you very much, Maharaj, for enlightening all of us. This is a wonderful way by quoting a number of Prabhupada pastimes. Maharaj, my question is, how do you keep ourselves motivated for service? And because your Holiness has spent more than 50 years in the movement, so just enlighten on this particular. What's he say? He's saying how to keep us motivated in our service. Yeah. You are only spent more than 50 years, so we will know. तो महाराज से कृष्ण से बहुत धन्यवाद. आपने प्रकाशित किया. प्रश्न है कि किस तरह से हम अपने आप को प्रेरित करके रखें सेवा करने के लिए. कि आपने 50 वर्ष से अधिक समय से इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, उस बारे में हमें भी आप कुछ बताइए. I find my most motivating activity is in the kirtan. तो मुझे सबसे प्रेरणादायक जो गतिविधि मेरे जीवन में लगती है वो है कीर्तन. Once in Vrindavan, Prabhupada was 1974. There was supposed to be an opening of Krishna Balaram Mandir in Janmashtami 74, but it was delayed until April of 75. तो 1974 के बाद है कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में उनकी ओपनिंग होने वाली थी. ये उसमें बहुत देर हो रही थी. So Prabhupada was there, and I came from Hong Kong, and Prabhupada welcomed me, and I stayed there. तो प्रभुपाद नहीं थे और मैं हांगकांग से आया. प्रभुपाद जी ने स्वागत किया और फिर मैं वहीं रहने का अरेंजमेंट भी हुआ. And every night we had kirtan, but Prabhupada was a little ill, so he didn't take part in the kirtan. तो हर रात को हम कीर्तन करते थे. प्रभुपाद उस समय बीमार थे तो वो कीर्तन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते थे. So the kirtan started at 6:30 in the evening, and all the devotees came, maybe 40, 50 devotees. 6:30 बजे कीर्तन शाम को शुरू हुआ और सारे भक्त आ गए. मान लो 40-50 भक्त आ गए. Because Prabhupada was there, so everybody had to come. तो प्रभुपाद नहीं थे तो सभी को आना था. And then he didn't give class. The sannyasis had to give class.
तो प्रभुपाद के पास में सन्यासी क्लास दे रहे हैं। So I had to give class too, मैंने भी वहाँ पे कक्षा ली, giving class in front of Prabhupada. प्रभुपाद जी के सामने कक्षा ली। So anyway, And, then we have second kirtan. उसके बाद आनंद का कीर्तन किया हमने। And that kirtan went longer, और वो कीर्तन काफी लंबा गया, an hour and a half maybe. 1.5 घंटा लगभग। And then Prabhupada would go back to his quarters. और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी वापस चले गए। So he sat on his bed, there were those wooden beds. He was sitting on the bed and they were ready to put up the mosquito net, but he was still talking. They didn't cover him yet. तो प्रभुपाद जी अपने लकड़ी का पलंग उस पे थे और मसला लगने वाली थी, भी लगाई नहीं थी, और प्रभुपाद जी भी बातचीत कर रहे थे भक्तों के साथ उस समय। Shruti Kirti and I were there, शुद्ध कीर्ति प्रभु और मैं वहाँ पे था, sitting on the ground. जमीन पे। And Prabhupada suddenly spoke with full authority. और प्रभुपाद एकदम पूर्ण अधिकार के साथ हमसे बात कर रहे थे। He said, this kirtan is Lord Chaitanya's special mercy. प्रभुपाद जी ने कहा ये जो कीर्तन है ये भगवान चैतन्य की विशेष कृपा है। And he said, this kirtan will give us life. ये कीर्तन ही जो है हमें जीवन प्रदान करेगा। And if we don't get life from the kirtan, simply sex life. और यदि कीर्तन में जीवन प्रदान नहीं होता है तो फिर यौन जीवन के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। So because I like the kirtans, then I was able to avoid sex life. तो इस तरह मैं कीर्तन का हमेशा पसंद करता हूँ, कीर्तन के द्वारा अपने को प्रेरित करता हूँ। Okay, we're going to stop here.